Thank you, Raman, and hi guys, and a very warm welcome to all our viewers जो हमारे साथ आज यहाँ पर दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर जुड़ रहे हैं. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. And दोस्तों, of course, the bilateral series between India and New Zealand is all set to kickstart from today, right after, just as we finished off the men's T20 World Cup. And New Zealand obviously will be in a very bittersweet kind of a position today, given the fact that they came second in the men's T20 World Cup. They just lost out to the champions Australians, and hence they would be in that spot where they would hope to start this bilateral series on a good note. So today we start off with the first T20 happening between India and New Zealand, and India of course looking ahead with two major changes coming in. एक तो उनका कप्तान, which is Rohit Sharma, coming into play now, and along with that we also have the head coach now, Rahul Dravid, for India. So let's start with the stats over here. First of all, coming up is Rohit Sharma. In terms of his batting profile, he's played 116 matches आज तक, जिसमें 3038 runs ये accumulate कर चुके हैं. उसके साथ इनके पास 118 हंड्रेड्स इन्होंने बनाए हैं, और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो हंड्रेड्स इनके 4 रहे हैं और 50s इनके आज तक के 24 रहे हैं. वहीं हाइलाइट्स में 118. A good batsman for India, but along with that also KL Rahul comes into perspective over here when we look at the screen. Overall playing 54 matches, playing a very crucial role, or would be playing a crucial role for India in this bilateral series, especially the 3 T20s that we're looking at. 1751 runs and 2 इनके पास centuries रही है with a strike rate of 143.28. A lot would be dependent on him also. Then we have RISHABH PANT, 38 matches overall खेले हुए, 590 रन इन्होंने सिर्फ बनाए. But what is noticeable over here is that इनका strike rate आज तक 123.43 रहा है, something which would play a very crucial role when we look in T20s. And then we have YADAV coming up. 8 matches खेले हैं, again a very good hitter of the ball, strike rate of 163.06. definitely will be a key player when we look at T20s. And then looking at ISHAN, KISHAN also 4 matches खेल चुके हैं, but again a good hitter with a 133.33 का strike rate and 150, that is a half century under his belt also. Let's move from here and have a look at the bowlers now who shall be playing for the T20s this time Indian angle से. Coming up on the screen, first of all अगर हम bowlers की बात करें जो crucial role निभाएंगे, सबसे पहले bowler के ऊपर ही एक नज़र डालेंगे coming up right there. But since we were talking about the batsmen, भी इससे पहले आपको बता दें वो 5 बैट्समैन तो अहम किरदार निभाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ बॉलर्स का भी रोल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, बहुत क्रूशल होता है. भुवनेश्वर कुमार 52 मैचेस, 50 विकेट्स ले चुके हैं, इकोनॉमी ऑफ 6.92. What is the important figure over here is 50 wickets under his pocket, and a very very important bowler from the Indian angle. Then of course Ravichandran Ashwin, 49 matches, 58 wickets ले चुके हैं, economy of 6.86, लेकिन इनका best है 4 for 8. Those figures definitely will be something that we'll be looking at also, that they come out to give a good performance this time again for the Indians. दीपक चहर भी आ रहे हैं, 14 मैचेस में 20 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट फिगर्स being 6 for 7 and economy of 7.59. These are going to be the 3 very important bowlers for the Indians this time in the T20 series. And then Akshar Patel also comes in, 12 मैचेस में 3 for 17 इनके रहे, यानी इन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं 17 रन देकर, जो आज तक इनका बेस्ट है. बट अगर विकेट्स भी देखें तो 9 है, लेकिन इकोनॉमी इन अ T20 अगर हम देखें 6.88 की होना इज अ वेरी गुड डिसेंट इकोनॉमी रेट, एंड उम्मीदें इनसे भी काफी रहेंगी. युजवेंद्र चहल also makes an entry now, 49 matches, 63 wickets, best being 6 for 25 with an economy of 8.32. He would be a very happy man since he's been able to make an entry now into the T20s, and a lot would be riding on his shoulders in terms of expectations coming into play, that how do these bowlers will be pairing, including युजवेंद्र चहल. ये तो रही भारतीय खिलाड़ियों की बात, लेकिन अब एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड की ओर से, यानी कीवीज की ओर से कौन से वो बैट्समैन और बॉलर्स हैं जो अहम किरदार निभाने वाले. सबसे पहले नजर डालेंगे इनके इंपॉर्टेंट या क्रूशल बैट्समैन के ऊपर. द फर्स्ट वन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन वुड बी केन विलियमसन. ऑफ कोर्स 74 मैचेस, 2021 रन्स बना चुके हैं, एंड 50s इनके, यानी हाफ सेंचुरीज इनके 14 आज तक रही है. स्ट्राइक रेट 123.98. आंकड़े तो इनके काफी अच्छे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ये आपकी बार खेल नहीं रहे हैं. जी हाँ, ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ द बायलैटरल सीरीज, the T20s that we're looking at. But moving on, we have Martin Guptill, another very key batsman for the Kiwis. 109 matches, जिसमें 3,147 runs and a strike rate of 135.64. हाफ सेंचुरीज इनकी रही हैं 18 और 2 इन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं. Look at that strike rate, 134.64.
135.64, playing a crucial role out there. Glenn Phillips being the next batsman, 32 मैचेस में 611 रन ही इन्होंने बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 141.43 का। आप सभी को बता दें T20 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अच्छा स्ट्राइक रेट बना के रखें, बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी रन्स एन इंडिविजुअल बैट्समैन मेक्स, बट ओवरऑल एज अ टीम when each player comes to contribute, how many are good hitters. We of course have DARYL Mitchell again after that. Then we have 22 matches, 356 runs, strike rate 139.06. Let's not forget that this is the Kiwis. These are the Kiwis who will be very wounded Tigers this time because they lost to Australians in the finals in the men's T20 World Cup, and just very immediately within a short span of time they are back playing the bilateral series. Also a lot will be resting upon these players to make things turn around for the Kiwis. इनके bowlers के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं. टिम सेफर्ट आ रहे, 37 मैचेस खेल चुके हैं, 711 रन इन्होंने आज तक दिए हैं, लेकिन इनके उसके साथ ही साथ 50 अगर बात करें हाफ सेंचुरीज तो उसमें 50s इन्होंने सिर्फ 5 बनाए और स्ट्राइक रेटिंग का 132.64 है. ये तो इनकी तरफ से बैट्समैन की बात है, लेकिन अब हम बॉलर्स की तरफ बढ़ेंगे और एक नजर डालेंगे द की बॉलर्स दैट वुड बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द Kiwis this time. The first one coming into picture over there for you would be, in the 5 important bowlers coming up on the screen, would be Tim Southee, the man that these players will be dependent on this time. 90 matches, yes, and उसके साथ साथ 107 विकेट्स ले चुके हैं. बेस्ट फिगर्स 5 for 18. वो आंकड़े अपने आप में काफी सॉलिड है to make any team scared. And of course Tim Southee also will be leading the New Zealanders this time since Kane Williamson could not be a part of the squad. And यहाँ से देखना होगा कि टिम साउदी की कप्तानी के अंदर ये टीम किस तरह से परफॉर्म भी करती है. The next one being Trent Boult, of course, 41 matches, 59 wickets, best economy, best being 4 for 34. Again, very good figures out there in terms of stats, but will remain to be seen that on the field, once these bowlers come down to play, किस तरह से इनके लिए सीरीज टर्न आउट होती है. Let's move on to the next bowler who would be making an important contribution for the Kiwis this time. Ish Sodhi, let's not forget also his contribution in the World Cup that's just concluded. How can we forget this leg spinner? 64 matches, 82 wickets, 4 for 28, economy of 8.07. A man that can just spell out some magic from that ball when needed at the crucial time. Then Mitchell SANTNER comes into play, 59 matches. इनके बेस्ट रही है 4 for 11, another wicket taker and a crucial बॉलर. अगर हम इनकी बात करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने आज तक अहम पारी निभाई है या कड़ी निभाई है, खासतौर से एक बॉलर के तौर पे कीवीज के लिए. एंड इकोनॉमी 7.31, नॉट प्रीटी बैड व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम द T20 perspective, but these bowlers will of course be playing a very very important role for the Kiwis. And then finally comes Adam Milne. मैचेस इनके 29 रहे हैं, 31 विकेट्स बेस्ट है इनका 4 for 37, 7.54 की इकोनॉमी. All of these bowlers coming together will definitely play a very very important role for the Kiwis. Well, on that note, this was all that we had in the stats zone for you lovely people. आप लोग कहीं मत जाइएगा. Right after the break, we bring to you Cricket Live with Raman Bhanot.